171, let's start. क्या है 3 power 10 20c 0 20c 10 minus 3 power 0 wait what 9 okay 20c 1 19c 9 और फिर चलते जा रहे हो ओके 20c का क्या हो रहा है पहले 0 है फिर 1 है फिर चलते जाओ फिर 10 ऑफ कोर्स दिस इज लाइक व्हाट 20c I guess like 20 minus r so r equal to 0 पे ये ऐसा होगा right yes and then और क्या अपने पास में 20c oh it's not 0 actually but yeah whatever okay r यहाँ से start करेंगे अपन right so 10c r in that case oh यहाँ पे 20 क्यों है ये तो oh okay so ये c10 है ये c10 है ये c10 है चलते जाओ till c10 of course यहाँ पे 10 आएगा all the time and then ये चीज़ क्या होगी just 20 to 10 पे जा रहा है like 10 plus r बोल दो ना so initially 0 है इसलिए this doesn't look so good एक काम करो इसको ऐसे लिखो या फिर जो भी है छोड़ो ऐसे लिख डालते एंड देन यू वांट 3 पावर 10 फिर 3 पावर 9 ओके और उसमें नेगेटिव आ रहा है लाइक नेगेटिव 3 की पावर ओके वो r है राइट यस सो r इक्वल टू 0 और फिर अब ये r इक्वल टू 10 है सो इट्स लाइक समेशन ऑफ दिस थिंग फ्रॉम r इक्वल टू 0 to 10 बिकॉज राइट सो एट 0 इट्स 10c 10 जो कि ये चीज़ है देन यू वांट 20c 20 which oh it should be 10 over there okay sorry yeah like add r equal to 10 ये 0 हो जाएगा so that makes sense cool so अब अपने को करना क्या वैसे yeah we want to know कि right so ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है okay so you want 20c 10 minus r like 10 plus r and okay very weird अगर मैं 20 okay so मैं इसका 20c 10 plus r I guess so this will work I think I know क्या होने वाला है यहाँ पे so negative 3 power r right well this is also cr I guess better yes so I think ये चीज़ है पहले तो 20c 10 plus r रहेगा and then this is the coefficient of you know what actually maybe no maybe that's not how it's supposed to be we'll just put 10 actually so it's the coefficient of x power 10 in this expansion negative 3 plus x की power 10 so okay not just 10 10 plus r in fact or yeah some of these things like coefficient of x power 10 in the expansion of this thing right now फिर चलते जाएगा but then ये x में ऐसा लिख सकता हूँ ना so 1 plus negative 3 plus x की power इस पूरे की power 10 right so initially क्या होगा r equal to 0 पे okay so start कहाँ से रहा है just 20c 10 okay yeah I mean of course पहले तो मैं 10 लाना पड़ेगा ना otherwise तो start ही नहीं होगा so पहले 9 तो भूल जा like okay at 10 it will start like फिर 10 okay 20 sorry so like 20 से 10 आएगा फिर negative 3 plus x की power 10 उसमें से yes फिर बस चलते जाओ right and then it will like 20c right I guess that is the thing so because वो increase हो रहा है right so r equal to 0 r equal to 1 and so on you just want x power 10 coefficient in this thing which is like negative 2 plus x में x power 10 coefficient which is like 20c 10 and then you want negative 2 की power 2 की power 10 basically and yeah that's the coefficient so 2 power 10 times 20c 10 which is c next question 172 which is let the line okay this line divides the area bounded by this and okay 0 फिर y equal to 4 and y equal to 4 x is equal to 16 so like 0 to 16 हाँ still एक बार इसको ड्रॉ करके देख लीजिए y equal to x पर ऐसा है x equal to 0 is just this line and then y equal to 4 is this is a like what 2 comma 4 I guess okay so y equal to 4 okay x equal to 2 actually नहीं यहाँ भी रहेगा ना so this is also the thing this is like negative 2 comma 4 okay so ये x equal to 0 है ये x equal to 0 and this is the thing okay अपने को सिर्फ ये एरिया चाहिए in fact because x equal to 0 start करने वाले so then it's just this area और अपने को क्या दिया y equal to mx divides this in two parts if the area above y equal to mx is 7 times the area below it the value of mx पहले तो ये एरिया ढूंढ लो in fact कितना होगा इस इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक काम करो ना रिस्पेक्ट टू वेट अच्छा ये वाला एरिया पहले ढूंढ लेते हैं व्हाट इज दिस एरिया गोइंग टू बी दैट इज जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर राइट दिस इज लाइक व्हाट 4 minus x ये जो एरिया जस्ट 4 minus x स्क्वायर
का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 आई गेस या सो जस्ट 8 minus x cube upon 3 मतलब 8 upon 3 so just 16 upon 3 is this area तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे क्या चाहिए अपने को रेशो 7:1 अच्छा तो ऊपर का ये 7 टाइम्स चाहिए और नीचे का एरिया लाइक जस्ट 1 टाइम्स दिस इज वेरी वियर्ड ओके इट्स लाइक 7/8 ऑफ दिस थिंग यानी कि कितना तो 14 upon 3 दैट इज द एरिया ओके मैक्सिमम तुम एरिया क्या ला सकते हो अगर तुम्हारे साथ एक ट्रायंगल बन रहा है दिस इज 4 दिस थिंग इज 2 सो जस्ट okay 4 and this is bigger than 4 it seems so h में ऐसे जा रहा होगा understood so you want to figure out कि यहाँ पे कहाँ पे कट करने वाला so that well yeah ये एरिया कितना है and then ये एरिया कितना है and so on okay then the value of m is I mean for sure less than ये जो भी slope है which is 2 so it's less than 2 we know that but क्या हो सकता है 1/4 okay cube root of 4 I don't know negative 2 doesn't make sense because वो yeah just have to cut at that point so कितना एरिया होगा in fact it's just I mean ये जो एरिया रहेगा just 1/8 of that right which is 2 upon we just want the area to be 2 upon 3 we'll see कि कैसे होगा so when is y equal to mx being okay equal to x square just x equal to m so like integration from 0 to m well, yeah of mx minus x square and then yeah that area should just be 2 upon 3 basically so m में equation मिलेगा अपने को just yeah like m squared upon 2 right just m cube upon 2 minus m cube upon 3 I guess so this m cube upon 6 is equal to this thing m cube is equal to both ways here right yeah just 4 like m equal to cube root of 4 so c is the answer next question 173 I really thought कि वो सिर्फ एक triangle हो जाएगा it's like very easy but नहीं okay 173 73 is function 0 to infinity to real be a continuous and swiftly increasing function so that f cube of x is equal to this integration okay the area enclosed by y equal to f x the x and the ordinate at x equal to 3 so इसका क्या है ये oh this is very weird differentiate कर सकते हैं अपन directly just it's like y cube is a function of x of course like 3y squared y dash that's equal to I mean we are different of x of course so क्या जाएगा x times y squared which means that 3y dash is equal to x so like y dash is just 1/3 of x squared upon 2 so like x squared upon 6 plus some kind of constant yeah but यहाँ पे देखो ना ये क्या हो रहा है like 0 to x तो यहाँ पे सिर्फ एक ही x आएगा यहाँ पे x square which means like यहाँ पे constant होगा ही नहीं in fact that is the thing oh it's not y dash actually it's just y itself so yeah like इसका cube क्या होगा x power 6 upon 6 power 3 and that's equal to integration of x f oh god it's like 1 upon 6 square and then फिर यहाँ पे क्या आएगा x power 5 okay that explains it so that is why अपने को करना क्या है y का the area enclosed by y equal to f of x the x-axis and the ordinate at x equal to 3 so x upon 6 is like this thing the x-axis is just this okay the ordinate at 3 oh okay it's like x equal to 3 so उसके wait what ordinate at x oh, okay it's just this thing of course ये जो line है I know ordinate usually just y coordinate होता है but यहाँ पे it's the x equal to 3 line in fact okay so it's just this area I guess yeah that looks correct so it's just integration of this thing from 0 to 3 which is like x cube upon 3 I guess okay and it's like 3 cube upon 3 so 3 square upon 6 which is 3 upon 2 so B is the answer next question 174 174 is the equation of transverse axis of the hyperbola. This hyperbola is okay. What is this like? Ooh, what is this? I see what is going on. So it's just a point a distance is equal to right. So transverse axis you want. Okay, तुम्हें focus मिल जाएगा तुम्हें directrix मिल जाएगी. So or you just want the equation, right? So तुम directly से perpendicular, right? It's actually doable. No big deal. So 4x plus 3y, huh? Right. It's like distance from a line of course the line would just be 4x plus 3y equal to 0 right और जब अपना फोकस रहेगा जैसे 3, -1 और उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है ऑफ कोर्स लाइक वो 5 वगैरह तो वो मैनेज कर लोगे नो बिग डील आवर लाइन इज जस्ट 4x plus 3y is equal to 0 right yeah that is the thing so उससे परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्या होगा what 4,3 is perpendicular right this of course
Okay, just इससे perpendicular. That makes sense. It just 3x minus 4y is equal to some constant. इस केस में constant क्या होगा? Just 9 minus 9 plus 9 plus 4, which is 13. So that's the 9, which is where? See, next question. 175. Delete 175. Let's go. Uh, the area bounded by y equal to x sine x and y equal to 0 from x equal to n pi to n plus 1 pi b. Like, okay, y equal to this x-axis. Okay, so like x-axis, this thing, and from n pi to, right, the and then this are in. Okay, cool. So like what integration of, wait, n pi पे क्या है? 0 है, and then n plus 1 pi पे भी 0 है, and then sin x उसके बीच में या तो completely positive होगा फिर completely negative होगा. So right, it's just the mod of the integral, right? Just x sin x dx. इसका integration from x equal to n pi to n plus 1 pi. You know what? Let's just replace x by n pi plus x, right? So it's like integration from 0 to pi of, so n pi plus x, and then यहाँ पे sin x आएगा, and then you want like dx. Okay, so yeah, you can see it's just going to be in AP because like n pi integral जो भी आएगा यहाँ पे integration of sin x वो ठीक है. Yeah, the main thing is or sin x का integration, like okay, it's positive because sin x throughout positive था or negative था or whatever. So yes, these are just in, that should be the thing, right? So yeah, 0 to pi ये भी positive था. Yes, it's going to work out. So yeah, these are just in AP. So A is the answer. Next question. 176. We're not calculate किए भी. These are just in AP. 176 is what? A point P is an arbitrary interior point of the equivalent triangles of side 4 if x, y, z are distances from of P from the sides of the triangle, then the value of x plus y plus z का square is equal to. Point P है, कोई तुम्हें point है from equivalent triangle of side 4. Oh, okay, understood. So yeah, like x plus y plus z distances है, right? That times हर एक में side multiply करो, just 4 उसका half ले लो, that's the area of वो जो तीन triangle बनेंगे. This is equal to the total area, which is just 3 upon 4 times the s squared, which is just 4 squared, this is right? But yeah, that's the thing. So x plus y plus z क्या हो गया? ये तो 2 होने वाला था, जो भी उसका 4 स्क्वायर, तो फिर एक 4 तो ऐसे ही गया, एक 4 ऐसे गया, just equal to 2 sort of 3. तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? Just 4 times 3, which is 12. So this is B. Next question. ये तो काफी easy था, I guess. Okay, 177. 177 is the legs of a right angle triangle are AB. The line segment of length D. Sorry, what? Line segment of length D connecting the vertex of the right angle to the point P on the hypotenuse. Oh, okay, I understood. So like ये AB है, ये कोई तो point. Okay, vertex of the right angle to a point P on the hypotenuse. A के साथ में, okay, it encloses this delta angle, and this is of length D. Okay, the quantities A, B, D, and delta are correctly rated as. Oh, okay, interesting, I guess. 1 upon 2D is equal to sin delta upon A plus sin delta upon B. So this is cosine delta. Oh, so you want like A as a function of understood. So basically तुम बोल क्या रहे हो कि बस D ढूंढो, right? Given delta, just figure out what D is. Oh, you should have told me. Right. Okay, so like how would you do that? इसका एक काम करो, डेल्टा के लिए अल्फा यूज करो और थीटा यूज करो, राइट? थीटा इज बेटर बिकॉज जो डेल्टा लिखना जानते आएगा हर टाइम. सो दिस इज लाइक थीटा, ये एंगल पे पता नहीं है, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे. वी नो कि ये एंगल, ओके वी डोंट नो दैट दिस एंगल इज जस्ट समथिंग. नॉट गोइंग गुड मैन, नॉट गोइंग गुड, दिस वोंट हेल्प. पैरामीटराइज भी नहीं कर सकते ना इसको, दिस इज जस्ट बैड, रियली बैड. कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर पाऊँ इसमें. That is doable. Oh, I know. Area is the way. So just right. That's the thing, of course. So like what, half AD sine theta plus, oops, plus half BD sine of 90 minus theta, which is just cosine theta. That's equal to the total area, which is just half of AB, which means, क्या हो गया इसको, right? Which means that उसको 1 upon D वहाँ पे डाल दूंगा. So just 1 upon D is equal to, और ये 1 upon A से multiply है. Okay, just sin theta upon A plus cosine theta upon B. I guess that's the answer. Which means C is the answer.
वेट नहीं, कोसाइन में अपने को क्या चाहिए? कोसाइन अपने को ए चाहिए, नहीं बी चाहिए, राइट? कोसाइन में बी चाहिए अपने को, कोसाइन में बी चाहिए. इट्स नॉट दिस फॉर, वेट व्हाट, 1/2d डजंट मेक एनी सेंस. वेट, क्या हो गया? नो, इट शुड बी sin theta upon b. अपन ने a b से डिवाइड किया ना यार, so just sin theta upon b and cosine theta upon a. Right, in that case, okay, just c. Okay, next question, 178. Okay, events AC are independent if the probability that related, okay, A, B, C are probability of A equal to 1/5. ठीक है, उनकी probability सब दी है. A की probability दी है, B की दी है. Probability of A intersection C, well, C independent है ना, so just probability of A times probability of C है. So this is equal to 1/20. मतलब probability of C basically मेरी. So probability of A is 1/5, probability of B is 1/6, probability of C is 1/4. What is the probability of B union C? So either B or C basically ऐसा बोल रहे हो ना? Yes. B or C independent है क्या? Well, they didn't actually give us that. Uh, yeah, वो उन लोगों ने दिया नहीं. In fact, do we even need the? No, we don't actually. Wait, B union C. अच्छा ठीक है समझा मैं. Right. It's not that hard. तो A को भूल जाओ, just B और C को देखते, right? Yes. So probability of क्या क्या निकलना है अपने को? Intersection C is equal to 1. Whatever, probability of C कितनी है? Just 1/4 अपने को पता है. Probability of B is 1/6 and probability of B union C is equal to 3/8, right? So probability of B intersection C कितना होगा? It is probability of B union C. Wait, what? Think about it. Probability of C plus probability of B, that is 2 times probability of B intersection C plus probability of, no, 2 times, just probability of B union C plus probability of B intersection C. Yes, that is the thing, I guess. So that just means probability of B intersection C is, yeah, इन दोनों का sum minus ये चीज, yeah, that's the thing. तो ये क्या 3/8? Just 1/4 minus 3 like 2/8 minus 3/8 is just 81/8, like 1/6 minus 1/8, right? Which is, it's what, like 1/6 minus 1/8, which is 1/2, 1/3 minus 1/4, which is 1/12. So 1/24, right? This is 1/24, I guess. Yeah, that makes sense. So okay, fine. करना कैसे अपने को? B और C के बारे में क्या? Okay, independent or whatever, right? A and C are equivalent. That's not right. Okay, B and C are, okay, whatever, we'll see. So अपने को B intersection C मिल गया है. Draw this out. अच्छा, वैसी probability of B क्या है? 1/6, और C के सेट के अंदर probability क्या है? जब अपन C में है तो B की होने की probability एक्चुअल में ऐसी रहेगी, and then total C होने की probability 1/4 है, so divide by this 1/6. Oh yeah, these are in fact independent. मतलब कि B and C are independent, which is A. Next question, 179. हाँ, coincidence, I guess, yeah. 179. The length of the perpendicular from origin to the plane passing through non-coplanar collinear points A, B, C. Okay, through them you want the plane and you want the length of perpendicular from the origin to that. Understood. Hard thing actually. समझ रहा हूँ मैं. It's still kind of weird. I mean, you can always use the, like, the volume of क्या था? Right, so 1/6 the volume ABC. This is like the volume of tetrahedron with origin ABC things, right? And this is equal to what? So think about वो जो distance है right times the base area, but ये pyramid जैसा हो गया ना, so like 1/3. So 1/3 जो भी base area होगा, which is the, what is that base area? It's like the 2/2 liter. That is very weird. Oh, cross product, of course, cross product. So just B vector minus A vector cross C vector minus A vector, right? Well, yeah. So ये इसका magnitude, of course. So this is the thing. That's that, and that terms of this height. Okay, or distance or whatever. So the height is just box ABC upon 2 times of, इसको थोड़ा सा simplify करके देखते हैं यार. So just
p वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस p वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और फिर ये जो चीज है वो तो मर जाएगी अपने आप. दिस इज लाइक व्हाट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. ओके, सो रीअरेंज करो a वेक्टर ab प्लस bc प्लस ca ऑफ कोर्स. सो a क्रॉस b प्लस, मैं वेक्टर्स में डाल, इसमें ये साइन डाल नहीं रहा हूँ बट वो होना चाहिए वहाँ पे, b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a. दैट इज द थिंग, राइट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. Interesting. Okay, so yeah, that's the thing. So D looks correct. Yes, so D is the thing. Next question, 180. 180 is in if each of the quadratic equations, this equation, okay, has real and equal roots. X square plus 2x plus b equal to 0 and x square plus 2bx plus, okay, plus c equal to 0. ठीक है ना? तो इन तीन equations में, right, each of these has real and equal to 0. Oh, that's it. That's all you're seeing. Seriously, just a squared equal to b. Oh, awesome. It's like b equal to a squared, c equal to b squared. Just actually write this down. b equal to a squared, c is equal to b squared, and a is equal to c squared. But that means that c is equal to like a power 4. But that means a is equal to, well, okay, power 4 चाहिए ना फिर, so just a power 8 I guess, because, right, I mean a power 4, yeah, that's the thing, just a equal to 0 or a power 7 equal to 1, और अगर real values है then that just means a equal to 1, right? अच्छा, तो हाँ, real values ही है I guess. So bigger than 0 बोल रहा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता. So a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1, whatever, right? abc can't be irrational, what keeps you, अब देखो समझ गया abc क्या है यार. ABC are integers. Okay, these can't be rational numbers, granted. Can't be rational. They are rational numbers. Integers are rational numbers. So C is the answer. Next question. मैं समझ गया नहीं? Yeah. What's the big deal? सही तो है यार. और क्या हो सकता है? Next. 181. Wait. A is not equal. Oh God. But ये तो सारी सारी 1 के equal हो जाएगी. That doesn't make any sense. और सारे squares. Okay. Positive numbers. So there are no such ABC. ऐसे कोई ABC है ही नहीं. But मतलब wait, what? ऐसे कोई ABC है ही नहीं इनफैक्ट, राइट? बिकॉज आइदर a equal to 1 और ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर्स बोले तो ओनली वन वे, आइदर a equal to 0 तो फिर सारे सारे 0 हो गए, और a equal to 1 फिर सारे सारे 1 हो गए, और इन बोथ केसेस a equal to b equal to c हो रहा है. सो हाँ, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ ABC so this happens. So no such ABC exists. Okay, cool. 181. In is equal to this integration. Okay, e power negative n sine theta d theta from 0 to pi upon 2. Then for k less than 1, limit as n tends to infinity of n power k in. Maybe इसको अपन ढूंढ पाएंगे in some way. Okay, this is not going good. Oof. Like it's a function of n, you are saying. Okay. Yeah. Weird. Belongs to natural numbers. Isn't there some other way that I can just do this? Maybe there is. Then for k less than 1, cosine theta में डाल सकते हो. Yes, that's one way, but not useful, is it? No, it's not. तुमने कर भी लिया वो तो क्या, लाइक पाई अपॉन 4 वगैरह में कन्वर्ट कर दोगे. That's all you can do. उसके आगे क्या, right? This is not helping. So then क्या, फिर क्या करूँ मैं इसमें? Additional parts or something? No, it does not help. Feynman's method. तुम एक साइन थीटा सामने ला सकते हो, या बस साइन थीटा सामने आएगा. That's not helping because you want a cosine theta in front, right?
Exactly. Wait. Cosine theta. नहीं यार, तुम एक को चेंज करो, तुम्हें दोनों के दोनों चेंज करने पड़ेंगे. दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सो ये तो अजीब है. फाइन, वॉट एवर, नॉर्मली देखते फिर. देन फॉर k लेस देन 1, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n पावर k. n पावर k तो जीरो पे जा रहा है. एंड व्हाट इज in इज लाइक, wait, ये जो चीज है नेगेटिव n, like it's finite all the time, isn't it? Because n नेचुरल नंबर है. sin theta goes from 0 to 1 basically. This thing is finite throughout, तो इसका अंदर का एरिया भी finite रहेगा. So like n power k that just goes to 0, this thing is a finite value. It's just 0, right? This limit is just 0 basically. इसमें तो सोचने वाली बात ही कुछ नहीं. Oh god, seriously, just B is the answer. Yeah, without even thinking, because ये infinity नहीं हो रही है, then just means right. फर्क नहीं पड़ता तुम n को कितना बड़ा कर रहा. Wait, okay, as n goes to infinity, हाँ, और then this also goes to 0, of course, right? Because e power negative n sin theta बोल रहे हो ना तुम लोग, तो e power negative 1 is like that's less than 1 for sure, so it's either finite or this thing is 0 all the time for all n. मतलब कि ये तो अपने आप 0 हो गया. Okay, 182, मतलब करने की जरूरत नहीं है. That n belongs to natural number, satisfy this equation, then n is equal to what? Okay, so 2n plus 1 p n minus 2n plus 1 factorial upon, subtract it's like n plus 2 factorial basically, I guess. Yeah, नीचे आएगा 2n minus 1 factorial, because yeah, subtract करो just n minus 1 factorial. So नीचे तुम्हारे क्या आएगा, n plus 2 n plus 1 and n, और ऊपर क्या आएगा 2n plus 1 and just 2n, right? And this thing is equal to what? This thing is equal to 3/5 for some n, right? And what is n equal to? Well, first of all, ये n तो गया, just this thing. फिर और क्या कुछ जा रहा है क्या? नहीं, ये तो नॉर्मली करना पड़ेगा. ऊपर just 10, so 20n plus 10 is equal to 3 times of ये, just 3n, 3 times of what? n squared plus 3n plus 2, which is just 3n squared plus 9n plus 6 or something. Okay, so it's very weird. ये तो कैसे अजीब हो रहा है कुछ भी. Am I sure correctly किया मैंने? लग तो रहा है यार. Subtracted n plus 2. Okay, it's n minus 1 for sure. This looks correct. This does look correct. Okay. Okay, cool. ठीक है ना फिर. Just let's see something happens or not. Like 11. So this man आ जाएगा. Just minus 4 equal to 0. So yeah, I guess something might happen. Minus 12 n plus n minus 4 equal to 0. So either n can be equal to 4, n minus 4. एक बाहर आएगा, just like 3n plus 1. Yeah. तो ये तो गया, n positive है, which means n equal to 4. So yeah, which is B. Next question, 183. Let's go to 183 now. If 1 plus x to the power 25 is equal to this, then a0 plus a2 plus a, oh god, सारे 1 3 सारे ऑड नंबर्स जो है वो गायब कर दिए लोगों ने, राइट? कुछ और इसमें अजीब तो नहीं किया है, नहीं, सिर्फ सारे ऑड नंबर्स गायब हुए. सो ये चीज बेसिकली क्या है, ऐसा पूछ रहे, राइट? Easiest that just put 1 and then minus 1 and yeah, you're just add them, so उसका एवरेज ले लो. Just 3 power 25 plus 1, right? Because negative 1 निकालने पे वही होगा, and that all cancels, right? Yes. फिर plus, okay, 3 power n plus 1 upon 2, right? So basically ऐसा पूछो ना कि ये चीज जो है, is this even or odd or what? इसका फॉर्म चाहिए. So right, it's like इंटीजर तो है एटलीस्ट. This is of what form, right? Okay. Oh, you can write it in different ways. It's like 3 plus 1 and then फिर 3 power n minus 1 plus चलते जाओ till 1 eventually. Okay, इसमें negative चाहिए था, but whatever. This would work if it's actually negative. If n is odd, then it's doable. If it's even, then problematic हो जाएगा, right? Yeah, if it's even, then that's a problematic thing. क्या था वो, lifting the exponent, right? जो भी है, just do it the usual way. We want to see कि
like yeah कि 2 पावर क्या इसमें मैक्सिमम आने वाला है, isn't that right? मैं पूरा भूल चुका हूँ ना वो. If this was even you can't factorize it, so वो problematic हो जाएगा. You need to think of something else. अच्छा इसका normally देखते हैं ना, let's just see कि क्या ये 4 का multiple है क्या है. So this can be done as 4 minus 1 की power n plus 1. जब तुम इसको expand करोगे तो 4 की power आएगी इसमें. So this modulo 4 is like negative 1 की power n plus 1, which is either 2 or 0, depends n क्या है. So this can be odd or even. It's an integer, that's all it is. हाँ, odd of the form. नहीं यार, you can't say for sure if it's odd or not. They're just not doable because like n equal to 1, 3 plus 1 upon 2, like 4 upon 2, this is 2. N equal to 2, 9 plus 1 is 10, 10 upon 2, 5. एक में even आया, एक में odd आया. You can't say. Yeah, this is just not doable. This just doesn't make any sense. कुछ गलत हुआ है क्या अपना? हाँ अपना गलत हुआ है, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे 25. मैंने देखा क्यों नहीं पहले? Okay, this is the thing. So यहाँ पे 25 है. I mean, then it's yeah, like 4 minus 1 की power 25. Mod of 4 कितना हो जाएगा? Negative 1 power 25, right? 25 is an odd number, so right, just 0 हो जाएगा. So actually it's even. So it's even, right? And of what form modulo? Oh, it's like modulo 12 बात करना है क्या? Exactly like this. Of the form 3n plus 1. Okay. So modulo 3 is 1 upon 2. That doesn't make sense. No, it doesn't make any sense. अच्छा अगर ये 3k plus r आ गया, then what we are basically saying is like 3 power 2, okay, 25 plus 1 is equal to 6k plus 2r, right? Oh, then what we are basically asking is कि modulo 6 ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं. 25 is like 5 times 3 power 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, right? So 6, that's the problematic thing, was it with 3? Oh god. Right. So it's negative 3 power 25. Which is negative of the, oh, you should have known that, right? Yeah. So 3 power 25 is congruent to negative 3 power 25, but that's actually negative of 3 power 25. मतलब कि 3 power 25 is congruent to 0. Or like 2 times of 3 power 25. Okay, that was pretty obvious. Both are obvious. You can't do that. Then now what? So you want modulo 6? For that what you do is like modulo 2 nikalo, which we know is just 0, so it's a multiple of 2, and modulo 3 is congruent to 1, right? So modulo 6 is also just not congruent to 1. Modulo 3 is congruent to 1, matlab ki it's also congruent to 4, and modulo 2 it is congruent to 4. In fact, modulo 4 it is congruent to 0, matlab it's congruent to 4. So this is congruent to 4 modulo 12. मतलब कि ये जो चीज है, it's actually something like 4 plus 12k, k integer, and that thing upon it's like 2 plus 6k basically equal to ये चीज. Oh, you should have told me like that. So it's of the form 3n plus 2 or 3n minus 1 or whatever. So C is the answer. Wait, no, it's not odd. I mean, I just said it's even. Odd. Okay, so it is of the form 3n minus 1, but it's not odd. So A is the answer. Next question. 180 का A. Yeah, जी मुझे लगा था इसमें even and form 3n minus 1 होगा. It's not there for some reason. जो भी है. 184. Consider this function where p of x is a polynomial such that p triple dash of x is equal to 0 everywhere and p of 3 equal to 9. If fx is continuous, x equal to 2, then p of x is. Okay, so function ऐसा है. Okay, p triple dash equal to, oh, this is 0 everywhere, it's like polynomial function. Okay, दिया ही है उन लोगों ने. ठीक है, so basically it's a quadratic function, right? Okay, and p of 3 is equal to 9. So this is like x minus 3 times ax plus b plus 9, something like that, right? This is what the function is. So okay, if f is continuous at x equal to 2, at x equal to 2, why would they do something like that? Then p of x, oh,
या ओके, एक ही तरीका हो सकता है कि x माइनस टू भी फैक्टर हो इसमें एक। ओके सो समझा समझा समझा। ठीक है ना, सो जस्ट डू द थिंग्स लाइक कैसा हो जाएगा ये। x minus 2 is a factor and x minus 3, so like when you put 3 over this get 9, 3 put करें भी ये 1 हो जाता है ना, so just you can do this thing x minus 3 plus this is actually a nice thing because what this means is like जब तुम 3 put करोगे ये तो हो गया and right I mean isn't that awesome, look at that, that's a polynomial that happens to right, और क्योंकि ax plus ax plus bx plus c होता है and then इसमें दो इक्वेशंस मिल रहे हैं अपने को, wait what, सिर्फ दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, that doesn't make any sense। So factor और फिर अंदर एक लीनियर फैक्टर आएगा, वो जो लीनियर फैक्टर है that should basically become 9, that means it's of this form, actually more like this form but whatever, समझा। then what you are saying is कि ये जो right okay then p of x is, तो जब तुम इसमें 2 पुट करोगे right इस वाली चीज में, so what you get is like negative a plus 9 minus a, that is equal to 7, which means a is just equal to 2, so it's actually this thing। ठीक है, तो करना क्या, p of x is, oh just figure it out, like x minus 2 times 2x minus 6 plus 9, which is just plus 3. This is what, 2x square minus 4x plus 3x, which is minus x minus 6. So 2x minus x minus 6, which is the next question. 85, sorry, 185, whatever. 185 is, if alpha beta gamma real numbers such that alpha less than beta, okay, जो भी है, then, oh god, 1 plus e power alpha plus beta plus e power 2 times of alpha plus beta, okay, ये अजीब है। So this determinant is पॉजिटिव नेगेटिव, क्या करना है इसका, ठीक है, तो e power 2 alpha, e power 4 beta, how am I supposed to solve this, must be something that I can do, right? It's determinant, subtract of course, that's one thing you can do। so अपने को बोला है कि right like alpha plus beta is less than any other combination, so एक काम करो ना, ये चीज सबसे छोटी है, इसको सब्ट्रैक्ट करो हर जगह पे, बिकॉज ओके अभी बीटा है, बीटा प्लस गामा है, वो बड़ा होगा 2 बीटा से, मतलब गामा प्लस बीटा है दैट इज yes like gamma plus beta is less than 2 gamma for sure, gamma plus delta से भी छोटा होगा because beta is less than delta, okay then और क्या है यहाँ पे, and then यहाँ पे 2 gamma है, यहाँ पे gamma plus delta है, okay cool। कॉलम 1 जो है that is less, उसके सारे कंपोनेंट्स लेस है कॉलम 2 से एंड कॉलम 3 से, because it does seem like that because it's just right delta over there, जो भी है प्लस गामा, ठीक है ना, अल्फा प्लस डेल्टा, श्योर, सो ये सारे इससे कम है, then just subtract that right, yeah just subtract that fact, so we just get like positive numbers over there, जो भी है देखते हैं क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल subtract करके देखते हैं। so पहले इसमें क्या आएगा, अच्छा पहले का भूल ही जाओ, सेकंड कॉलम में डायरेक्टली देखते हैं, सो जस्ट ये चीज माइनस ई पावर अल्फा प्लस बीटा जो भी है subtract किया, सो ई पावर अल्फा कॉमन आ गया, इज जस्ट व्हाट ई पावर का, एक काम करो यार, जिससे ई पावर अल्फा इज इक्वल टू ए ई पावर, हाँ वो वैसा लिखते हैं, देन दिस बिकम्स लाइक व्हाट, ये ऐसा हो जाता है ना। सो सेकंड कॉलम लिख ही डालते हैं इसको फिर से, 1 प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज क्या हो जाएगी, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, फिर 1 प्लस क्या है ये चीज बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर दूसरा क्या था 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये है 1 प्लस, ये बहुत लंबा होने वाला है नो, बट देन कोई और तरीका तो है नहीं, जस्ट डू इट। फिर और ये क्या चीज है, 1 प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर जो भी है, सी इसका क्या होता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो, जस्ट ए तो इससे कॉमन है, सब्ट्रैक्ट किया जस्ट ए, okay then you want like what, c minus b, so a times c minus b plus a squared times c square minus b square, like c minus b तो कॉमन आ गया, just a times c minus b बाहर, just 1 plus a times of c plus b, so yeah फिर सिमिलर चीज ऐसे इसमें बना लिए, राइट
बट देन वेट, यहाँ पे b प्लस c है. दिस लुक्स सो वियर्ड. ओके तो e, ओके b कॉमन आ जाएगा, आई गेट दैट. एंड और क्या कॉमन आएगा, लाइक c माइनस b कॉमन आ जाएगा. तो दूसरा जो रहेगा जस्ट लाइक b टाइम्स c माइनस b. बट अंदर क्या आएगा, जस्ट 1 प्लस b times of c plus b. That's different than what I thought. ये तो बहुत लंबा होने वाला है यार, तो कभी खत्म ही नहीं होगा. और फिर सिमिलरली तीसरे से तो कुछ बाहर आएगा, लाइक क्या, गामा कॉमन है इसमें, सो जस्ट c बाहर आएगा. एंड देन वन थिंग c माइनस b तो है ही हर जगह पे, एंड जस्ट लाइक 1 प्लस c टाइम्स ऑफ c प्लस b. एटलीस्ट ये तो भी सही हो रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी तो है. सो सेकंड कॉलम में ये सब आएगा. सो एक काम करो, c माइनस b बाहर निकाल दो सेकंड कॉलम से कंप्लीटली. इट जस्ट बिकम्स c माइनस b. फिर ये जो पूरी चीज थी वो, और ये चीज a टाइम्स ऑफ 1 प्लस a c प्लस a b, लाइक b टाइम्स ऑफ, हाँ वो सब चीज, राइट. ओके प्लस b c प्लस b स्क्वायर, दैट इज डजंट मेक सेंस. वेट व्हाट, अलग तरह से लिखते हैं. राइट लाइक दिस थिंग, c प्लस b टाइम्स a स्क्वायर. ओके प्लस a. ओके फिर लाइक c प्लस b, देन somehow like, what if it's kind of a polynomial or something? This thing becomes what? This is taking forever. कुछ तो भी तो ऐसा करो जिससे ये अपने आप हो जाए. जस्ट क्या कर सकता हूँ ना. ऐसा कुछ हो रहा है कि एक्चुअल में नहीं यार, बस बहुत बुरा है. मेकिंग सेंस. जो भी है यहाँ पे क्या जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी था इसमें प्लस बी, फिर यहाँ पे सी प्लस बी, एंड देन इट इज गॉट लाइक जो भी है सी स्क्वायर प्लस सी. और यहाँ पे थर्ड रो में क्या आएगा, सो पहले तो ए बाहर गया. ओके अच्छा, और इसमें कॉमन क्या है, जस्ट ए. और अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, टी माइनस बी. सो ठीक है, टी माइनस बी कॉमन आ जाएगा. सो टी माइनस बी भी है, पॉजिटिव है दोनों. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एटलीस्ट. और इससे ए कॉमन आएगा, वो तो वहीं पे चिपका हुआ रहेगा. एंड देन सिमिलरली जैसा पहले हुआ था, जस्ट ए बट देन 1 प्लस ए टाइम्स ऑफ सी प्लस डी, नहीं बी प्लस डी. दैट मेक सेंस. जस्ट सी प्लस डी की जगह हर जगह पे डी प्लस बी लिख दो. ओके लाइक बी प्लस डी टाइम्स ये सेम चीज बेसिकली, ए स्क्वायर प्लस ए. फिर लाइक बी प्लस डी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस बी, देन बी प्लस डी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस सी. तो फिर एक काम करो ना, इसको सब्ट्रैक्ट करा दो. लेट्स सी व्हाट वी गेट. सब्ट्रैक्ट, ये ए बी से तो मर गया हर जगह से. या तो बचा क्या, इसमें डी माइनस सी वापस बाहर निकाल लो, डी माइनस सी बाहर आ जाएगा. तो क्या बचा, ये जस्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो या a square b square c square, that's all you get in that case. This is going really bad. Okay, अब क्या, how do we use this thing, a square b square. Oh then what you can do is like a c plus b को multiply करो इससे, and then okay ये पूरा का पूरा गया in that case. ये पूरा गया, so इसमें यहाँ पे a, oh that's a jackpot because इसका तुम्हें मतलब पता है, ये जो ओके नहीं इतने जल्दी भी नहीं. ये भी उतना ही बुरा है. वैसे ए बी आ रहा है, not what I want, definitely not what I want. यार ये क्यों खत्म नहीं हो रहा है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं इसको खत्म कर पाऊं. ओके यहाँ पे ABC आ गया. Then ये क्या चीज थी, 1 प्लस ए बी प्लस, हाँ वो ओ इस सब में बी में राइट, इस सब में बी से मल्टीप्लाई किया हुआ. लोग ए बी बी स्क्वायर सी बी, तो फिर बी से इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करा दो, दैट विल गेट रीड ऑफ द थिंग. ओके सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर तो है बट टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करा था. ओके देन जस्ट 1 1 1 इन दैट केस. ऑसम, फाइनली दिस इज द थिंग. सो अब इसका क्या,
ये सब ट्रैक कर दो, इस गेट लाइक a माइनस b, सो b माइनस एक बाहर आ जाएगा. ओके कूल. यहाँ से b माइनस a बाहर आया एंड दिस इज बिकम्स लाइक व्हाट 0. तो अभी तक ऐसे कुछ निगेटिव बाहर नहीं आया बिकॉज c माइनस b पॉजिटिव है, d माइनस b पॉजिटिव है, d माइनस c पॉजिटिव है, b माइनस c बाहर आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा. वो हटाया तो क्या मिला यहाँ पे, इनफैक्ट जस्ट 1 एंड यहाँ पे b प्लस c मिलेगा, b प्लस a सॉरी. सिमिलरली यहाँ से c माइनस a बाहर आएगा, a सॉरी प्लस a, जस्ट 1 इन दिस केस एज वेल, यहाँ पे 0 आ जाएगा. दिस लाइक c प्लस a. फिर सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेट करो, जस्ट दिस माइनस दैट व्हिच इज c minus b, so it turns out to be positive, right? तो पूरा फैक्टराइज हो गया, बढ़िया. Just c minus b, like it's positive. So yeah, b is the answer. 185. बहुत लंबा नहीं हो गया? Yes. कोई इसी इजी तरीका मुझे चाहिए. इस केस में होगा तो मुझे बताओ. 186. If the chord through the point whose eccentric angles are theta and phi on this pass through the focus, then the value of this thing is. एक chord है जिसके eccentric angles phi और theta है. ओके वो कॉर्ड पास कर रही है फोकस से. हाँ राइट. वैल्यू ऑफ 1 plus e and then you want tan of theta upon 2 tan of. देखा से लग रहा है. आई डोंट नो, इट्स लुक लाइक आई हैव सीन समवेयर. ओ एक काम करो ना, डिफॉर्म द इलिप्स इनटू अ सर्कल. सो बेसिकली तुम्हारे जो पॉइंट्स आएंगे दोस विल बी लाइक a e पावर i phi and e पावर i theta, राइट. और तुम्हारा जो फोकस आएगा दैट विल बी लाइक 8 टाइम्स e ऑफ कोर्स बिकॉज वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, सो जस्ट या डिफॉर्म होकर ये हो जाएगा. सो ये पास हो रहा है थ्रू दिस, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग बेसिकली. अच्छा एक काम करो, a भी हटा दो बिकॉज वी डोंट ओनली केयर अबाउट द शेप, तो अपने साइज का फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स जस्ट दिस थिंग. और ये जो e है ये इसेंट्रिसिटी अलग है इनफैक्ट. इसको ऐसे लिखो ना, इनफैक्ट कोसाइन फाई कोमा साइन फाई जो भी है, कोसाइन फाई साइन फाई and this thing is cosine theta sin theta, or you just e comma 0 in fact. And then let's see if this is yeah basically that's the thing. uh I guess अपन determinants यूज कर सकते हैं वापस, like ax plus by plus c equal to 0 अपना लाइन है जो इसे पास करती है. This means abc से 3 वेक्टर से such that this happens. Yeah, I mean you can use that, right? So just ये जो determinant रहेगा c phi c theta and then just want e, फिर y के लिए just sin phi sin theta 0 and 1 1 1. ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 0 बेसिकली. सो जस्ट या मतलब क्या उसका लाइक sin theta टाइम्स c phi माइनस e एंड देन या मतलब वही राइट, दैट लुक्स करेक्ट बिकॉज वहाँ पे 0 0 1. यस प्लस sin phi times cosine theta minus e is equal to 0, which means like e times sin theta plus sin phi is equal to ये चीज जो है जो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, डोंट यू बिलीव दैट. सो यहाँ से क्या 2 साइन वो सब आएगा. इट्स लाइक बेसिकली सेइंग e इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा माइनस फाई, थीटा अपॉन माइनस फाई अपॉन बेसिकली, व्हिच आई बिलीव इट्स लाइक 1 माइनस tan, जो ये चीज है tan थीटा अपॉन 2 tan फाई अपॉन 2, उसको अभी के लिए a बोल दो. सो माइनस a अपॉन 1 प्लस a, मतलब कि तुम्हारा जो a है इन रियलिटी इज लाइक डिनोमिनेटर प्लस subtract numerator, which is just a upon 2, so we cancel just denominator minus numerator upon denominator plus numerator, which is 1 plus e, right? That's the thing. Okay, so what is 1 plus e times a? That's just equal to 1 minus e, so c is the answer. Next question, 187 karo. So 187 now. In triangle ABC, if sine 2a plus sine 2b plus okay, summation of sine 2 is equal to this thing. Okay, cool. Triangle is, but I've seen this before, right? Just this thing, 4 product of cosine a. No, wait, 2 hai na? So the sine in fact. Let's try it out. For example, triangle ABC, right? Yeah, this will work in fact. So 60 degree पे काम करता है. Yes, this is equal to what? 4 minus 4 cosine a cosine b. Interesting, I guess.
ओके और क्या करूं मैं इसका आखिर? गॉड ये तो अजीब हो गया. नाउ व्हाट? लाइक साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 1 - कोसाइन ए कोसाइन बी बोल रहे हो. बट इसके आगे क्या, मैं क्या करूं क्या इसका एग्जैक्टली? ट्राइंगल इज, I don't know how do I even deal with this thing. Sin A cosine B वैसे ही. I think एक तरीका हो सकता है. So like 0 is equal to 1 - cosine A cosine B. Plus मैं forcefully just sin A sin B include करा दूंगा because I want to. And then यहाँ पे मैं what I will put is actually just, I guess I should put 1 + 1 फिर -1, so it should be negative in that case, right? That's better. But no, I actually want this to be it's getting bad. This is really getting bad. Think, yeah, 1 plus sine c, you can do that. That is doable, but it's gonna take a lot of time. Ah, yeah, ये तो काम ही नहीं करेगा. Okay, so some other way. What about the triangle? इसको split करते हैं. That's the only way you can actually do this thing. So इसका split करने पे क्या मिलेगा? I'll just get like -2 and then cosine of a plus b, which is I minus c. So you negative cosine c. But इसमें single आ रहा है. That's not what you want. Okay. a minus b भी आएगा ना. Not good, not good. Come on. Now what do I do? ऐसा है that the triangle is like what? Sine 2 plus sine 2 plus sine 2c. There's some way that I can deal with this. Problem is ये ऐसे एक्चुअली में काम नहीं करता है. So say cosine, so that would have made much more sense. But ऐसे तो it's a right angled function is साइन 2 है यार. मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता इसको. डायरेक्टली नहीं होता है. ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? A, so यहाँ पे क्या square 3/2 नहीं पाएगा. 3 square 3/2 equal to, yeah, that was the formula, just 4 product of sine A, not cosine A. So then अब क्या? अगर अब sin A आ गया then it's not going to be doable. Still एक बार ट्राई कर लेते ना. Who cares? यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव cosine C and what else? uh, wish there was like some other way मैं इसको डायरेक्टली कर पाता. doesn't seem to be anything that I can do. ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा. So minus cosine C आ गया and what else? So subtraction, which is like plus cosine of a minus b, जो भी है. Okay, that's this thing. So basically तुम क्या बोल रहे हो that 4 product of sine a is equal to 4 minus 2 times c. Okay, it's like plus 2 cosine c plus 2, oh god, plus 2 cosine of a minus b. And how is this useful? I have no idea. ये कब होगा? Can you even deal with this in some way? I guess maybe 2c. Maybe शायद से c is a special things like replace c by pi minus a minus b. So फिर ये this just becomes what? Negative sign of वो सब. Maybe that's the way to do it. Could be. Could be that is the way. In fact. ये क्या हो रहा है इसमें यार? तो कोई और तरीका है नहीं. We'll just actually do what I just told. तो अपन क्या करेंगे? Just sin 2a plus sin 2b. फिर से लाइक माइनस तो उसको उधर भेज दो और क्या करो इसको उधर भेज देना. प्लस 4 कोसाइन ए कोसाइन बी इज इक्वल टू 4 प्लस so yeah, like cosine 2 still कर देगा sin 2 times of a plus b, like okay, just sin 2a cosine 2b plus sin 2b cosine 2a. Okay,
Have I like seen this somewhere? Positives. Okay, cool. और फिर ये भी positive आएगा. That is the thing. But हाँ, ये इतना लंबा और गंदा हो रहा है ना. मुझे some better way कि मैं इसको directly कर पाता. 4 cosine cosine b is equal to that is positive. Yes, I know that. But ये तो अजीब है. 1 minus cosine of 2b. How is that even useful? I have no idea. Let's do some. I don't know. Just move on. मैंने कभी देखा नहीं है इसको. Just move on. 187 is just weird. 188. 188 is four distinct integers form an EP. If one of these is equal to the sum of the squares of the other three, then the sum of the squares of all four is. चार integers AB form कर रहे. One of these is equal to the sum of the squares of the other three. बड़ा वाला of course. Okay. Then the sum of the squares of the four numbers is. Bad. Just A plus. I get it. Sum of the squares of the other three. A plus t का square. Four distinct integers form an AP. Sum of the squares of three numbers is equal to a sum of the squares of this guy, right? Sum of squares. What can we do? Minus c का square is like you want to see तो what d होगा. We'll have to do it in this way. Just a plus 2d का square. एक काम करो बीच वाले को we'll just put as a so this is like a minus d का square plus a plus d का square plus a का square. And sum of these guys is equal to the sum, right? One of these is equal to the sum of this. Wait, one of अच्छा उसका square भी नहीं. Oh, this is equal to what, like a plus 2d? That's what you're saying, right? Okay, weird. It's like a square यहाँ पे वो तो कट जाएगा. Just a square plus 2d square is equal to a plus 2d. Yeah. So like a times of a minus 1 plus. Okay, this is not going to help. 2d times d minus 1. But और कोई तरीका तो है नहीं. Equal to 0. So तुमने बोला है it is integers or something. Of course, d can only be positive, right? That's what we assumed. इसका क्या मतलब हुआ कि 2d times और d, yeah, like minimum 1 तो रहेगा at least. और अगर 1 रहा तो मर गया basically, काम नहीं करेगा, right? d can be 1, then we'll just have, okay, let's a minus 1 co-prime numbers basically है. Yeah. अब क्या? Sum of the squares of the four numbers is. Sum of the squares of the four numbers. That's gonna be what, like a plus 2d times. I mean, yeah, just 2 times a plus 2d actually. So 2 times of a plus 2d कितना होगा? अपने को ये basically मिल रहा है, right? Cause नहीं, उसका square है, sorry. Okay, so basically ये चीज. So last वाला तो है ही square है, right? And then a plus 2d plus 1, I guess. I mean, this won't help directly. Yeah. So, oh, it should be 2a squared over there because not just 2a, it's like 3a squared, in fact. Okay. So, yeah, ऐसा होगा 3a squared plus 2d squared is equal to a plus 2d. Then you want to figure out ये चीज क्या है. कैसे कैसे काम करेगा ये? Like these are integers, that could be an important thing. अच्छा. कुछ तो होगा जो मैं कर पाऊंगा इसमें. Like 2d times d minus 1. अपन assume कर रहे हैं कि d positive है. So this 2d times d minus 1, this thing is positive, I guess. Like d 0 भी हो सकता है. Then just at least bigger than or equal to 0. It's equal to a. So a is bigger than or equal to 3a squared, right? So wait, that like means, oh, okay. Phase 1 is a is bigger. Right, a times of 3 minus 1 is less than or equal to 0. So basically a just belongs to this thing.
it belongs to 1/3 0, okay, like 0 to 1/3 actually. But then there's no integer in there except 0, of course, like 0 is an integer, so okay, 0 is the answer. But a is necessarily 0, right? A is necessarily 0, which means that D can be 0 or 1, right? So A equal to 0. I don't think D 0 because distinct bola, so like D equal to 1, that's the thing. So if distinct integers, that's like this thing 0, -1, 1, and 2. So in sum of squares, which is like 1 plus 1 plus 4, right? Which is 2 plus 4 is like 6. Yeah, so A is the answer. Next question. 189. इसे नंबर से वाले क्वेश्चंस क्यों डाल रहे हैं यार? 189 is let g be equal to this, okay, where f double dash bigger than 0 for all x. G of x is necessarily increasing in the interval. G is necessarily increasing in the interval. So f double dash is bigger than 0. Like f of 2x for minus 5. Huh. Weird. Maybe ये इससे necessarily हमेशा bigger रहने वाला for some reason. Don't think about it. So f dash is always increasing, at least you can say so. F dash was always increasing. And when is g increasing? It's like when is g dash positive? For that to happen, इसका derivative एक बार देख लेते हैं. It's basically like what 4x, okay, just x f dash of 2x minus 5 minus 2x है ना पे, so minus x and f dash of minus x square. This should be positive. उन लोगों ने already बोला that f dash is increasing function, right? Okay, first of all, like x times of f dash of 2x minus 5 minus f dash of, हाँ तो फिर एक ही तरीका है. If x bigger than 0, then 2x minus 5 should be bigger than 7 minus x square. If x is less than 0, then उसका उल्टा चाहिए. Yeah, this becomes like 3x square bigger than 12, so like x square bigger than 4, x bigger than 2. If x is bigger than 0, this should happen. Otherwise, if x is less than 0, then x square less than 4, which means that x already negative अपने को पता है. So just x is bigger than -2 and less than 0. That's one thing. Or yeah. So -2 to 0, union to infinity, which is B. Next question. 190. Integration of tan 2x, tan 4x, tan 6x dx is equal to f of what? Oh god. Then f of e is, it's like यहाँ पे negative कर दो, यहाँ पे negative कर दो. So just उनका जो sum है that's equal to 0. So like we'll get right tan of arguments. All right, of course. Yeah. Wait. Okay, मैं सोच रही एक में pi डाल देंगे. Yeah. Tan of pi minus 2x, tan of -4x, tan of 6x. Basically ये चीज, right? So there is sum that is equal to like pi, which means the area of product that can be done as a sum basically. This can be done as this thing. Summation of okay, like it's negative tan 2x फिर negative tan 4x and then फिर plus tan 6x. इसका integration from x is equal to what to what? Okay, दिया नहीं, बस 12 times of this thing. Okay, cool. It's 12 natural log of secant x आता है usually. It's like okay, इसमें जगह natural log of और से upon 6 वगैरह आने वाला है. Oh god. Okay, so upon 6 वगैरह आएगा, इसमें upon 12 है, which means like right secant square 6x upon, okay, then f of e is secant square आ रहा है ना, because वो 2 आया है वहाँ पे. Yes, and then similarly वहाँ पे आएगा like secant of 2x पर नेगेटिव में natural log of secant of 2x upon 2, फिर यहाँ पे just 6 आ जाएगा. Explains why this is happening. And then also right, so ये in fact ये ही है, right, which means well yeah, f is just identity function, so f of x is equal to right, so f of e is just e. Next question in fact, that's it. Okay, so I'll see you guys in the next video.